नहीं अंकित, मैं आईआईटी केजीपी से नहीं, नहीं मैं कानपुर, आई एम ऑलरेडी पास आउट एक्चुअली. सो आई एम सुबोध. आई वाज एट BARC earlier. I left it and then I joined IIT Kanpur. I graduated from there in MS by research in 2022, and currently I'm working in private in Pune. Uh, yes, I'll start recording. Just हिमांशु स्ट्रीम करो। हिमांशु स्ट्रीम करो। let me just start recording. जय सर, एक फाइनल डाउट. आपको मैंने अनम्यूट किया, तो अगर आप म्यूट करके फिर से अनम्यूट कर सकते हैं. मैं 1 मिनट। नहीं ना सर, वैसा नहीं हो पा रहा है, तभी नहीं तो हो मैं पा आपको रहा है. बोला अलाउ करिए। आप अलाउ करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक. ओके, ग्रेट. Recording in progress. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. So, as I was giving my introduction, I did my MS from IIT Kanpur in thermal. I was gold medalist of the batch, and then uh, after once that was done, I joined as software developer, and currently I'm working in private. Me and Jayesh sir, we are conducting all this postgrad counseling since last 3 years almost. I have 3 years of work experience into all this, so and mostly I do it out of interest. We all do it more out of interest and less out of money. So that being said, so I'm sorry I might not be able to take everyone's doubt today, especially इतने स्कोर पे कहाँ लगेगा and all. सो इसलिए आज का सेशन मोस्टली पेड लोगों के लिए रखा है, बट ऑब्वियसली आई वांटेड कि सब लोग एटलीस्ट सुने, सब लोगों को चीज़ें पता चले. इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबके लिए इसे ओपन कर देते हैं. सो सबसे पहले एमएस के बारे में बहुत सारे डाउट्स है, तो फिर मैं एमएस के डाउट्स ले लेता हूँ. मुझे ऑलरेडी बहुत सारे आए हैं, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू माय मोबाइल. यस. चलो. सो फर्स्ट डाउट इज कि एमएस, एमएस प्लस पीएचडी एंड डायरेक्ट पीएचडी. सो एज द नेम सजेस्ट, मोस्टली आजकल एमएस एंड डायरेक्ट पीएचडी होता है. एमएस या एमएस प्लस पीएचडी, एमटेक प्लस पीएचडी ज्यादा ऑफर नहीं करते, बॉम्बे वगैरह छोड़ दिए तो. सो कमिंग टू दैट क्वेश्चन, सो वी हैव एमएस. सो एमएस इज मोर ऑन द रिसर्च साइड. MTech is more on the coursework side. So MTech has something 8 to 10 courses usually. MS usually don't have that many courses, around 5 to 6 courses. And what follows after is around 3 to 4 semester of research work. That depends college to college. For example, IIT Madras has 2.5 years of MS as definition. IIT Kanpur has 2 years of definition of MS. MS has lower cutoff because demand is less. But right now, what I have observed is things are almost on the same level. Still, MS has less cutoff usually. One important thing about MS is it has both admission cycle. It is admitted in summer as well as winter. So because of that, what happens is you get the chance to get inside twice. So जिन लोगों का जैसे अभी नहीं हुआ, you can try again in winter as well. Coming to MS plus PhD and डायरेक्ट PhD. सो MS प्लस PhD में मोस्टली कोर्स वर्क तो तुम्हारा कॉमन ही होता है, तो तुम्हें PhD के लिए जितने कोर्स करने पड़ते हैं, विच इज आई थिंक 8 और 10 डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, उतने करने पड़ेंगे. एंड इन बिटवीन यू विल गेट एन MS डिग्री एज वेल. इसका बेनिफिट एग्जैक्टली तो कुछ नहीं है, बट हाँ उसी टाइम पीरियड में तुम्हारा एक मास्टर्स हो जाता है, एक PhD हो जाती है. और उसका एक और बेनिफिट ये है कि इन बिटवीन अगर तुम्हें कभी कभी PhD छोड़ के जानी है, मे बी आफ्टर 3 years 4 years यू फील लाइक कि नहीं है, मुझे अभी नहीं करना है, देन यू कैन गेट एन एग्जिट विथ MS डिग्री. बट जो डायरेक्ट PhD होती है, it is possible that you might not get any degree while you are living your PhD. Some colleges, let's say IIT Kanpur, allows an MTech exit as well, but MTech exit as well. But considering that is not a certain thing, so don't be a hopeful कि मैं अभी PhD admission ले लूंगा फिर कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद. What I will do is मैं MTech exit ले लूंगा. So don't do that. अगेन कमिंग टू डायरेक्ट PhD, डायरेक्ट PhD के लिए सब जगह पर इंटरव्यू होते हैं. MS के लिए इट डिपेंड्स कि इंटरव्यू है या रिटर्न है. फॉर एग्जाम्पल IIT कानपुर रिटर्न कंडक्ट करता है, IIT मद्रास इंटरव्यू कंडक्ट करता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, एंड वी काइंड ऑफ डोंट नो दैट फ्रॉम नाउ.
और लाइक राइट नाउ अ गुड स्ट्रेटेजी है इसकी, तुम अप्लाई कर दो एंड देन लेट्स होप कि क्या हो रहा है ना, लाइक दैट। आई होप when it comes to MS and direct PhD, things are clear. One more important thing, MTech has a fixed duration of 2 years. Most likely, or certainly you will complete things in 2 years. But same is not true for MS. Some of my friends completed their MS in 2 years, some completed in 2.5, and some took as much as 4 years. Reason being, it's a research degree, so you have to do some research. It has to have some value, it has to be presentable, the thesis should be good, the thesis is sent outside at times for the rechecking, for the review, and it should get an approval. MTech don't have these many steps. MTech का एक simple project होता है जो गाइड अपने आप भी काइंड ऑफ अप्रूवल दे सकता है, बट MS का जो अप्रूवल है वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। सो डोंट बी इन वेरी हैप्पी मोड कि अभी मेरा MS हो गया तो 2 साल में कंप्लीट हो ही जाएगा, नहीं। इफ यू आर गोइंग इन नाउ, कंसिडर 3 years एज अ बेस लाइन। अगर तुम विंटर में जा रहे हो तो देन यू कैन कंप्लीट इन 2.5 years एज वेल। सो MS मोस्ट लाइकली टेक्स 1 more year देन यूजुअली। मैं विंटर एडमिशन में गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं 2.5 years में कंप्लीट किया, एंड दैट वाज आल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट आल्सो सर्व्ड एज माय हाफ ईयर एक्स्ट्रा, तो मैं एकेडमिक ईयर के साथ मैंने कंप्लीट भी कर लिया। चलो, अब कौन से IITs MTech प्रोग्राम देती है, सो जस्ट गिव मी 1 minute। तो गाइस बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि कौन कौन सा आईआईटी एमएस प्रोग्राम ऑफर करती है। तो सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे एमटेक रिसर्च करती है, आईआईसी बैंगलोर एमटेक रिसर्च करती है, आईआईटी कानपुर एमएस रिसर्च करती है, आईआईटी दिल्ली एमएस करती है, आईआईटी मद्रास एमएस करती है, आईआईटी गुवाहाटी में एक ही प्रोग्राम है, एमएस एनर्जी प्रोग्राम है एमएस का। ठीक है, आईआईटी इंदौर में भी। ओके, तो इतने आईआईटीज है जहाँ पे आपका एमएस रिसर्च होता है। बाकी के जो आईआईटीज है वहाँ पे एमएस नहीं होता है। पीएचडी आपके सारे के सारे आईआईटीज में होती है। इसके ऊपर हम बात कर इस मतलब पीएचडी सारे आईआईटीज में होती है, एनआईटीज में होती है ना। एमएस सारे एनआईटीज में होती है, ना 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 एमएस आपकी सारे एनआईटीज में होती है, ना ही आपका एमएस सारे के सारे आईआईटीज में होती है। तो जो मोस्टली जो टॉप 7 आईआईटीज मैंने आपको बताया, इसी में आपका एमएस रिसर्च होता है। नाउ कमिंग बैक to some of the points, like I was also MS plus PhD student at IIT Madras. Okay, तो मैं कन्वर्ट कर सकता था मेरे एमएस को पीएचडी में। दैट ऑप्शन आई हैड, मेरी गाइड से मेरी उतनी बातचीत थी, मेरी उतनी बनती थी मेरी, तो दैट वो ऑप्शन मेरे पास में था। बट अनफॉर्चुनेटली आई लेफ्ट दैट आईआईटी मद्रास एंड देन आई केम टू राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, अब इस बात करते हैं कि विंटर एडमिशन और समर एडमिशन में क्या डिफरेंसेस है। तो इस कोर्स वर्क इज एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ जो जून एडमिशन होते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ जो एमएस की भी है वो बढ़ के आती है एज कम्पेयर टू विंटर एडमिशन। नाउ कमिंग बैक एज सर सेड कि 2.5 साल में आपका होता है। तो देखो गाइस, जो 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 विंटर एडमिशन होता है वो उसमें 2.5 इयर्स लगता है, और मोस्टली लगता है रेगुलर पीरियड में, क्योंकि आपको एग्जिट उन बच्चों के साथ में करना पड़ेगा जो आपकी नेक्स्ट बैच होगी। तो इट्स ये इससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप लोग लाइक जून एडमिशन में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, और जून से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जून से जो भी कंटिन्यू करता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस 90% पीपल ऐसे होते हैं जिनका 2 साल में आपका एमएस कंप्लीट हो जाता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर 2 साल में एग्जिट दे देता है। कुछ ब्रांचेस इन आईआईटी मद्रास वहां पे 2.5 साल 3 साल लगते हैं। कुछ ब्रांचेस बोल रहा हूँ, लाइक मैकेनिकल में थर्मल हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। बाकी केमिकल भी 2 साल में एग्जिट हो जाता है। कानपुर में भी केमिकल 2 साल में एग्जिट हो जाता है। उसके बाद मैकेनिकल का सर तो बताया कि सर ने खुद ने एमएस किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीजें होती है। अब लाइक मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल में भी आईआईटी कानपुर में 2 साल में आपका एमएस कंप्लीट हो जाता है। आईआईटी दिल्ली में 2 साल में आपका एमएस कंप्लीट हो जाता है। आज ही मैंने चीजें करके आई है। प्लेसमेंट सिनेरियो के ऊपर हम बात करते हैं, तो प्लेसमेंट सिनेरियोस काफी अच्छे हैं एमएस के एज कम्पेयर टू एमटेक। एमएस में मोस्टली 100% प्लेसमेंट होता है, बिकॉज आर&डी प्रोफाइल पे कंपनीज आपकी आती है। जो भी बच्चा है अच्छा प्लेसमेंट पे जाता है, और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज जो सेमीकंडक्टर पे डील करती है, हर आईआईटी में यहाँ से लेकर जाती है। एमएस आप लोग हर ब्रांचेस से कर सकते हो, हर डिपार्टमेंट से कर सकते हो। यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो अपने वीएलएसआई एमटेक में प्रोफाइल, एमटेक में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। वीएलएसआई पावर, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद एसपीकॉम और डीएसएआई ये मिलेगा। बट एमएस में ये चीज नहीं होती है। एमएस में सिर्फ आपका जो कोर ब्रांच होता है, जो बीटेक जैसा होता है, वैसे आपका एमएस होता है। लाइक एनर्जी साइंस हो तो एनर्जी साइंस, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओवर टू सुबोध। यस, सो MS का कई कई जगहों पे स्पेशलाइजेशन भी होता है, जैसे कानपुर दे हैव अ स्पेशलाइजेशन इन थर्मल, इन डिज़ाइन, इन रोबोटिक्स जो भी है।
So they have a specialization as well. uh, I'll come to placement in a while. So कौन से आईआईटी में एमएस का प्रोग्राम है, मुझे एक डाउट देखा कि अब तक मद्रास का ही पता है, बट यस, मद्रास का भी है। बॉम्बे में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमटेक आरए. IIT Delhi has an MS program, but IIT Delhi might have your pointer connected to it. कानपुर में है ही, और खड़गपुर आई डोंट थिंक इट हैज एक्सटेंडेड MS प्रोग्राम, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में है। मंडी हो गया, कुछ NIT त्रिची हो गया, ये भी कुछ कॉलेजेस MS के प्रोग्राम लेते हैं। MS अभी अभी मेन फ्रेम में आ रहा है। दैट्स वाई गो थ्रू ऑल द IITs ब्राउशर, वहां से तुम्हें पता चलेगी। मैं भी जो चीजें ड्रॉ करता हूँ मोस्टली, ऑब्वियसली आई हैव माय ओन एक्सपीरियंस, बट इस साल MS है कि नहीं, एडमिशन कितने हैं, सीट्स कितना है, ये सारी चीजें मुझे भी ब्राउशर से ही पता चलती है। नाउ कमिंग बैक टू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, MS में मेरा ये स्कोर है, नंबर लगेगा क्या? One thing I want to make clear this again and again, M.Tech has a fixed number of seats. Let's say IIT Kanpur Design, they will have something like 35 students, और उतने student आएंगे ही आएंगे no matter what. MS is not like that. The number of students that department want to allow for MS, it is being generated by the department or by the professors कि हाँ, I want to enroll these many students, these many MS students under me, so I want two MS students. Some professor will say I do not want any MS student, and based on that, the number of vacancies will be drawn. Now, it may happen that at some point of time, some department might want a lot of number of MS students, but some department might not want at all. That depends on professor, and also because there are two cycles, so some have their vacancies or seats in summer, some have their seats in winter. For example, when I got into MS at IIT Kanpur, we had something like 27 vacancies total for mechanical department, and after that, for 2 years, there were no vacancies for MS. There were no vacancies because professor had already occupied you know uh, their labs with the MS student. So don't be very much helpful होपफुल कि हाँ MS का फॉर्म निकला है, मैं मैकेनिकल का डाल सकता हूँ, तो फिर मेरा नंबर आ ही जाएगा, एंड लाइक दैट। MS इज अनप्रेडिक्टेबल. It is good, but it is unpredictable. For example, Madras did a good thing. They have shared how many you know seats there are. For example, mechanical UR has something like 17 seats. That's good. So that at least you have some idea, but don't expect कि सब जगह पर MS के इतने ही सीट्स रहेंगे. They could vary, they could go up and down or whatever. चलो, so I'll go to next doubt now. When and where should apply, and also the process. So mostly as I told, uh, कुछ IITs SOP मांगती है. For example, Madras is asking for SOP. When it comes to SOP, let me tell you frankly, they don't look at your SOP. They don't have time and resource to go through 300 SOPs and then shortlist some 30 people out of it for like 2 or 5 seats or so. I'm pretty sure they don't go through the SOPs. SOPs is like kind of an formality at that point of time. Once you go into interview, they might have your SOP in front of them. They might read it in front of you, and then might ask you some questions based on that. But when it comes to shortlisting, my gut feeling says, or my experience says, there is no way they go through your SOP. So don't stress about SOP too much. Along with that, even they know that you are coming for an MS degree, you don't have any research experience, you have just done your bachelor or so. So you have just done your bachelor, so don't think too much about research में क्या लिखूँ, ये topic लिखूँ, वो topic लिखूँ. For now, just write whatever SOP you can. नहीं है, you can get it generated as well. That's not a bad idea, I would say, at MS level. So don't worry too much about it. SOP, just take it straightforward. After that, mostly there are either written or interview when it comes to MS. M.Tech don't have these things much, but MS do. For example, Kanpur had conducted written and interview. Madras had conducted interview for the MS degree. I was selected at both. And along with that, uh, one thing I want to focus is M.Tech has M.Tech admission has at least 70% gate weightage. It is defined by Ministry of Education, so IIT has to follow it. But MS does not have any such restriction. MS or PhD, it is completely based on your interview, and I really don't think that your gate score will matter once you are into interview room. So because of that, even if if you are being called, you have equal chances of someone having higher score or someone having lower score. PhD, definitely they don't care about your gate score. MS, they may or they may not, we don't know. But for now, consider that
इंटरव्यू हैज अ गुड वेटेज व्हेन इट कम्स टू एमएस। एमटेक का हम ऐसा नहीं कह सकते, 30% वेटेज है। तो अगर तुम्हें लेट्स से आईआईटी बैंगलोर से कॉल आया है, बट योर रैंक इज मोर देन 1000 और सो, यू कैन बी सर्टन कि नहीं, यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज देर विल बी हार्डली 10 to 12 सीट्स, एंड डेफिनेटली इफ यू आर रैंक 1000, देर विल बी 10 people, देर विल बी 20 people ऑफ हायर गेट स्कोर देन यू हु हैज अप्लाइड, who will come to interview. So based on that, MTech you can judge ki, whether there will be a selection or not. MS you cannot judge the same. One more important thing, MS has stipend, same stipend as GATE, 12,400 जो मिलता है. Again, that depends on how, it depends on college to college कि कितने टाइम तक तुम्हें वो मिलेगा. For example, कानपुर give it for 2 years, मद्रास give it for 2.5 years, MTech RA जो IIT बॉम्बे का होता है, it gives for 3 years. So it depends whatever is the program duration. Hmm. When it comes to MS interview, how to prepare for them, or interview or written. So I would say two important things. Number one, don't prepare anything on the research side. They are not going to ask you what research or do you have any topic in mind, तुमने क्या किया and all. नहीं, they are not going to ask you that. Mostly I would say few things you need to understand. Number one, have your GATE syllabus ready. जो भी GATE syllabus है तुम्हारा, बस वही अच्छे से करो. नंबर टू, एक अपना स्पेशलाइजेशन माइंड में रखो कि मुझे थर्मल में लेना है, डिजाइन में लेना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में लेना है. यू कैन हैव दैट एज अ थॉट प्रोसेस. नंबर थ्री, मैथमेटिक्स पे अच्छा कमांड रखो, मैथमेटिक्स गो थ्रू करो. व्हेन इट कम्स टू गेट, वी वी ऑफन हैव अ टेंडेंसी कि वी टेंड टू इग्नोर मैथमेटिक्स. डोंट डू दैट. यहाँ पर मैथ विल हैव अ वैल्यू. डेफिनेटली इफ इट्स रिसर्च इंटरव्यू, मैथमेटिक्स विल बी आस्क्ड. एंड फोर्थ थिंग, थोड़ा अगर तुम एमएस रिसर्च कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट गो थ्रू करो, डिपार्टमेंट की कौन से प्रोफेसर्स है, थोड़ा एक दो नाम पता होंगे तो अच्छा है. अगर वहां पे जाते हो और वहां पे पूछ लेता है कि whom you want to work under, और तुम्हें किसी प्रोफेसर का नाम ही पता नहीं, तो मतलब दैट विल बी अ फेस पाम मोमेंट. नॉट वेरी डिटेल, वो बंदा कितना रिसर्च पेपर किया है उसके रिसर्च पेपर गो थ्रू करो, इतना बिल्कुल जरूरत नहीं है. बट हाँ, यू शुड नो 2 3 names एंड यू नो व्हाट एरिया डू दे वर्क. समवन माइट बी वर्किंग अंडर डीजल compression engine, someone might be working for capillary rises, someone might be working for like micro capillary and thermal expansion, things like that. उतना पता है काफी है. So do that when it comes to MS interview. I will repeat again. Number one, go through your GATE syllabus. Number two, do your homework, go through their website, go through the professor name. Number three, keep a good hold on mathematics. This much is more than sufficient when it comes to MS interviews. Can a direct PhD be converted to MS or vice versa? ओके, जस्ट टू बी क्लियर, मैकेनिकल वाले जो लोग हैं, आप अपने डाउट्स ग्रुप में डालो. मैं ग्रुप से उठा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो वॉट एवर डाउट्स यू हैव, प्लीज पुट इट इन द ग्रुप. I'll take them one by one, and after that I'll, if time permits, we'll go through the chats as well. And in between भी मैं chats के doubts लेना पढ़ ही रहा हूँ तो मैं ले भी रहा हूँ in between. Can direct PhD be converted to MS और vice versa? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है या फिर रूल नहीं है कि तुम ये कर ही सकते हो. कैन इट बी डन? यस, इट हैज बीन डन. मोस्टली वो एमएस नहीं मिलता, इन दैट केस एमटेक मिल जाता है इफ यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड कोर्स वर्क, जो तुमने किया ही होता है ऑब्वियसली, एंड इफ यू हैव सम रिसर्च और सम थेसिस टू बैक विथ. सर इसमें मैं बोलूंगा, आईआईटी मद्रास में एमएस मिलता है, आईआईटी दिल्ली में इसमें एमएस मिलता है, कानपुर में अपना एमटेक हो जाता है ये। ठीक है, हाँ, तो अपने कानपुर में एमटेक होता है वो तो अपने को पता है ना। पर करेक्ट. मद्रास में एमटेक नहीं देते वो लोग एमएस में दे देते हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूँ मद्रास की, कि मद्रास में अगर आप लोग गए 18 मंथ, अगर आप लोग रह 18 मंथ अगर आप लोग सर्वाइव कर जाते हो आईआईटी में, आपके कोर्स वर्क कंप्लीट है, आपकी थीसिस कंप्लीट है, तो आपके जो रिमेनिंग 6 महीने बचते हैं उस, अगर मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया पीएसयू वगैरह में, तो वो 6 महीने में आप लोग बाद में 6 महीने आके कंप्लीट करके अपने डिग्री उठाकर लेके जा सकते हो। अदरवाइज एक और सिस्टम होता है कि अगर आप लोगों ने 1 साल, जैसे कि कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पीएसयू में सिलेक्शन हो जाता है, लाइक आईओसीएल में हो गया या फिर किधर भी हो गया, तो उन लोग के लिए एक प्रोविजन बना हुआ है। आईआईटी मद्रास की बात कर रहा हूँ, नॉट इन कानपुर एंड अदर आईआईटीज, कि यहाँ पर आप लोग को पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाता है। 1 साल अगर आप लोग बिता देते हो और आपके पूरे 11 के 11 कोर्स वर्क कंप्लीट है तब, 11 के 11 कोर्स वर्क कंप्लीट है तब, तब आपको पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाता है। ठीक है, ओके। इसके बारे में गाइस मुझे भी नहीं पता था, बट बाद में मुझे अभी पता चला जब मैं आईआईटी मद्रास में ज्वाइन किया, इसके बारे में मुझे पता चला। ठीक है,
कोर्स वर्क कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, तो डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, नॉट एन इशू। यस, गो। Yeah. That being said, don't expect this PGDM will have a lot of value. Nobody cares about 1 year master's degree in industry. I have been in industry since 3 years. Trust me, everybody needs 2 years full-time master's degree. That will only have value. That too from a good college and with good pointer. Because सबको पता है बीटेक में लोग पढ़ते नहीं है, अगर एमटेक में जाके तो सुधरते होंगे करके। तो wherever you go, पढ़ो अच्छे से. Yes. So coming back to the original question. Can PhD be converted to MS or vice versa? So first, let me talk about PhD to MS or PhD to MTech. Can it be done? Yes. ये हाँ, कई बार किया जाता है, but one thing you need to understand is, when you are doing your PhD, you will be assigned a guide. You will work under him. You will do some research, and based on that research, you will say कि मुझे PhD नहीं करना, मुझे MTech चाहिए. Now, what happens at that point of time is your supervisor might get disappointed because of that, because he has put in so much energy, time into you. So because of that, he might be angry, and there could be some things happening here and there. So based on that, that could be a restriction for your MTech degree. Point being, ऐसा मत करो कि मुझे MTech चाहिए था बट अभी PhD मिल रहा है तो एक काम कर लेता हूँ, PhD ले लेता हूँ और बाद में MTech एग्जिट ले लूंगा. Don't think in that way, because anyway this whole route will take your 3.5 to 4 years anyway. तुम्हें कोर्स वर्क कंप्लीट करने में 1.5 साल लग जाएगा, उसके बाद 1 आध 2 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे. सो इंस्टेड इट्स बेटर यू टेक अप MTech, you get at higher better MTech. So don't think about that. Coming to next one, can we convert MS or MTech into PhD? Definitely. That's a very good, people do that all the time. Mostly two types of people do that. One, those who are extremely interested into research, जिनकी गाइड के साथ अच्छी बनती है, guide is very favorable to them, guide is very happy with them. और नंबर टू, दोज हु कैनॉट गेट अ प्लेसमेंट आफ्टर एमटेक. अगर तुम्हारा एमटेक में प्लेसमेंट नहीं होता है तो व्हाट पीपल डू, दे अप्रोच देयर और सम अदर गाइड एंड दे से सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, एंड दे स्टार्ट देयर पीएचडी देयर. So it's not a bad idea, but usually what happens is people who do masters in IIT, they tend to do PhD from abroad. Obviously, any abroad college, any good abroad college will be better than our IITs when it comes to PhD. So considering that, do people do this? Mostly not. For example, in my batch, hardly one or two people did that. Reason being, already 2 साल चले जाते हैं और once you go to MTech MS, you also see others, working for 6 years, 7 years in PhD, and it's not a very good sight to watch. So because of that, people get little restrictive when it comes to converting from MTech to PhD. Which IITs are better in terms of getting guidance from professors for a foreign PhD? Usually what happens is it depends on tier. तुम अगर टॉप 5 टॉप 7 में जा रहे हो, all the professors will be of good level. अगर तुम मिड में जाते हो, दे विल बी रियली, आई मीन अपर वाले तो बहुत अच्छे रहेंगे, मिड वाले अच्छे रहेंगे, और जो न्यू आईआईटीज है, दे विल हैव सम काइंड ऑफ यंग प्रोफेसर्स एंड लाइक दैट. इट हैज अ टू कॉइंड स्टोरी एक्चुअली. यू नो जिन प्रोफेसर्स के बाद एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, they could write you a good recommendation letter, they could send you at a good university, but on the same side they have a very high level of expectation when it comes to research work. For example, the guide I was under, he had experience of over 35 years, and given that experience, the work that I was supposed to do, the research that I was supposed to give as an output, it has to be of some commendable level. उनको mediocre research या mediocre चीजें चलती नहीं थी. So that's what I'm saying. What happens is, few professors, mostly those who join young, they could be little lenient, तो तुम्हारी डिग्री अच्छे से निकल जाएगी, but then their letter of recommendation or their contacts might not be that good. On the another side, my guide has suggested me, or he had even recommended me कि if you want, I could have you enroll in a PhD in abroad, or you can even do PhD under me. So I had that offer as well, but I had my own plan, so I did not do that. So the answer is कि that depends. Every IIT has very good teachers. Every IIT has decent teacher. Every IIT has some easy or lenient professors. So depending on that, you enroll with them and you get your degree. You do your work, you get your degree. Sir, you are under Samir Khandekar, sir, right? नहीं भाई, मुरलीधर सर. मुरलीधर सर के अंदर में. Yes, Okay, Samir okay. Khandekar sir is student of Muralidhar sir, so you can understand. Okay. But now both are not there, na?
नहीं, समीर खांडेकर सर passed away. मुरलीधर सर is हाँ, still there. Yeah. अच्छा स्टिल देयर, फाइन। Yeah. So, what's the scope after completing these programs? Coming to placement topic, most important, M.Tech placement versus MS placement. So earlier, what used to happen is, both used to have some different placement representative. M.Tech people used to push, or pull the recruiters, the companies toward themselves, and MS used to be left alone. But right now, what is happening is even all the companies knows that there are two masters program happening here. One is MS, one is M.Tech. So because of that, even they allow MS for everyone at IIT Kanpur when I was doing placement, which was like 3 years ago. 24. Wow, yeah, 3 years ago. All the companies that were coming, they were अगर वो एमटेक के लिए है तो एमएस के लिए भी थी. इन शॉर्ट दे वर ओपनिंग फॉर ऑल द मास्टर्स एंड इट वाज नॉट एनीथिंग लाइक एमएस और एमटेक. कंपनीज के पास भी कोई प्रेफरेंस नहीं था ऐसे कि उनको एमटेक लेना है या एमएस लेना है. बोथ वेर ट्रीटेड सेम. So there was absolutely no difference when it comes to coming for any profile. Rare cases में ऐसा हुआ है कि company liked some research work that is being done by an MS people, MS person, so they picked it up. But other than that, there is absolutely no difference when it comes to MTech or MS. Although one thing that I have seen, because MS has relatively less number of courses, MS does usually 5 to 6 courses, and MTech does around 8 to 10 courses. What happens is pointers or CGPA that MS people get, it is relatively higher than MTech one because 5 pointer में 5 courses में you tend to get some higher pointer, and when you increase the number of courses, it may happen that you might not get the same pointer. Considering that MS people tend to have higher pointer, but that is not entirely true, or it is confirm. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे गारंटी नहीं है उस बात की. सो प्लेसमेंट दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है अभी के टाइम पे. पहले देयर यूज्ड टू बी बट नॉट एनीमोर. सर इसमें तो मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा चीजें। अभी तो अगर मैं देखा जाए, लाइक आज आईआईटी दिल्ली में भी मैंने चीजें देखी, उसके बाद आईआईटी मद्रास में मैंने चीजें देखी, अभी रिसेंटली वाला इवन आईआईटी कानपुर में एमएस का प्लेसमेंट 100% हुआ है एज कम्पेयर टू एमटेक। एमटेक से बेटर प्लेसमेंट एमएस के हुए हैं। उसका रीजन ओके। ये भी है, एमएस हैज अ वेरी लो नंबर ऑफ पीपल देयर. एमटेक के बहुत सारा होते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे बैच के नेक्स्ट बैच से उन्होंने एमटेक की सीट 30% से बढ़ा दी थी. तो अर्लियर देयर यूज टू बी व्हाट 20 पीपल, 50% से बढ़ा दी. तो अर्लियर देयर यूज टू बी अराउंड 60 पीपल इन वन बैच. Now there were all of a sudden 90 to 100 people. Obviously, recruitment didn't increase in that fashion or in that rate. And because of that, MTech placement went little down. But again, this depends on individual to individual. If you compare higher pointer or people who are performing better in both MTech and MS, you will definitely see both are getting placed at same place. No difference. राइट, अगर अभी मैं बात करूँ सर तो रिसेंटली लाइक अभी आईआईटी मद्रास केमिकल का प्लेसमेंट हुआ है। टोटल 7 बच्चे, 7 बच्चे अच्छे माइक्रोन माइक्रोन टेक्नोलॉजीज में गए, 26 एलपीए। ओके, जो इनका दोनों का प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर रिलेटेड था, थोड़ा बहुत ही ज्यादा भी नहीं था, दोनों दो इसमें गए। 2 बच्चे रिलायंस न्यू एनर्जी में गए और 15.5 के पैकेज में, और 2 बच्चे ऐसे थे जिनका 12 के आसपास पैकेज लगा हुआ है। ओके, आज आईआईटी दिल्ली में मैं बात कर रहा था एनर्जी साइंस का, तो वो उसने भी सेम चीज बताया कि हमारे सीनियर में हमारे 3 लोग थे एमएस में, 3 ही लोग थे एमएस में, जहाँ पे 2 बंदे ऐसे थे जो माइक्रोन टेक्नोलॉजीज में गए, और एक बंदा कोई तो भी कंपनी उसमें गया करके। तो एवरेज पैकेज 20 का गया, तो कम बच्चे हैं, प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। 20 का होगा मतलब 26 26 पकड़ के चलो, 26 26 ही हो गया, और एक हाथ गया होगा। उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक ग्रीन भी आती है, ये भी आरएनडी प्रोफाइल में आती है। तो जितने भी कंपनीज होती है लाइक आरएनडी प्रोफाइल के लिए जो आती है, वो एमएस रिसर्च वालों को प्रीफर करती है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ ये चीज। ओके, जो भी आरएनडी प्रोफाइल के लिए आ रही है, और आप लोग एमटेक और एमएस जो भी करने जाते हो, ये रिसर्च ओरिएंटेड ही करने जाते हो चीजें, है ना। तो आरएनडी वालों को, एमएस वालों को प्रीफर किया जाता है यहाँ पर। ओके, कोई डाउट्स होगा सर तो आप ले सकते हैं अब। हाँ. और सर, थोड़े हायर पैकेजेस की बात कर रहे थे तो मैं बताता हूँ. मेरा एक दोस्त एमएस का वो 7 LPA पे भी प्लेस हुआ है. ठीक है. सो बी फ्लेक्सिबल विद दैट. आई हैव सीन पीपल गेटिंग प्लेस एट 31. आई हैव सीन पीपल गेटिंग प्लेस एट 7 LPA. अब 7 LPA उसे ज्वाइन नहीं करना था तो ही कन्वर्टेड इनटू पीएचडी. ठीक है. सो आई मीन दैट हैपेंस एज वेल. So it depends on you. It depends on your performance once you go into IIT. I won't really link the success with being MS or MTech student. Both are equivalent. Mm, क्योंकि इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होना है कि नहीं, ये तुम्हारे पॉइंटर और तुम्हारे रिटर्न टेस्ट के परफॉर्मेंस में डिपेंड करेगा. हाँ, चलो नेक्स्ट.
एक था कि डज एमएस हैव एनी पर्टिकुलर आईआईटी और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सी एमएस इज यूजुअली मोर फ्लेक्सिबल। इसके बारे में मैं अभी डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट गो थ्रू ब्राउजर्स फॉर एग्जांपल। मद्रास हैज क्लियरली गिवन कि कौन किस में अप्लाई कर सकता है एंड किस में नहीं कर सकता। इफ यू आर पीआई, इफ यू आर फ्रॉम वट एवर ब्रांच यू हैव, उन्होंने मेंशन किया है कि विच ब्रांच कैन अप्लाई वेयर। तो गो थ्रू आईआईटीज, देयर आरंट मच आईआईटी ऑफरिंग एमएस, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द ब्राउजर, दैट विल बी इजी थिंग टू डू। XCPI अलाउड होता है क्या? यस, यूजुअली दे allow XC and PI as well. Again, MS is flexible. I had a friend in IIT Kanpur. He had done his BTech in mechanical. He worked in TCS for 2 years. During that, he's understood कि भाई कंप्यूटर साइंस से लिख लूँ तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा. He wrote from computer science. Then he did it well. He joined MS at IIT Kanpur, and then he got into Microsoft. So like that. अरे, ठीक है, सेशन थोड़ा जल्दी रोको बिकॉज IIT मद्रास का लास्ट डे 3-4 अप्रैल को है, ठीक है। जस्ट एक मिनट प्लीज। अरे, तुम लोग क्या सवाल पूछ रहे हो? ठीक है, सो जस्ट एक मिनट। सो मोस्टली इस अगले 2-3 दिन में मद्रास का लास्ट डेट है, तो वो देख लो थोड़ा, बाकी तो चल जाएगा। बाकी गैस मद्रास के ऊपर में जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, देयर है ना। मैं मद्रास का MS M.Tech जो भी पूछना है बता दूंगा। कमिंग MS टू का मैं मद्रास का थोड़ा कोर्स वर्क के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि जैसे कि लास्ट डेट है, वैसे होगा, एक्सटेंड होगा, डेफिनेटली एक्सटेंड होगा। देखो MS का मद्रास ऑलरेडी में एक्सटेंड हो चुका है, इफ आई एम राइट। 31st वाज लास्ट डेट, आई थिंक सो। आई और रिमेम्बर सेइंग दैट होगा इन एक्सटेंड ब्राउजर। सर ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स कम भरे जाते हैं, बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता है। दूसरी चीज मैं थोड़ा बताता हूँ। एमएस में IIT मद्रास में 5 कोर्सेस होते हैं, हमें 5 कोर्सेस करना है। ओके, 5 कोर्स है। ओके, जिसमें आप सारे के सारे डिपार्टमेंट इलेक्टिव ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर गाइड। अगर गाइड प्रेफरेंस देता है, आपको देना है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ऐसा है। पर कर सकते हैं अपने मर्जी के ऊपर में भी आप लोग कोर्सेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर गाइड बोलता है, लाइक जो सब्जेक्ट फॉर देखो, एग्जांपल कोई एक कोई गाइड मिनट, होता है, जस्ट टू ऐड मी वन थिंग। जो गाइड बोलेगा, सर मैं बता दूं जो एक एक गाइड चीज। बोलेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। वो हाँ, बोलेंगे जो कि गाइड 3 कोर्स करो तो करो, नहीं हाँ, करो तो मत करो, सिंपल अगर बात वो है, हाँ। गाइड अगर वो गाइड पढ़ा रहा है, खुद का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो आपको उसके कोर्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप उसमें मना नहीं कर सकते हो चीजें, लाइक क्योंकि वो अपना जो नहीं, रिसर्च तुम होता है, वैसे भी अपनी जो मना नहीं थीसिस कर होती है। सकते, तुम वैसे भी मना नहीं कर सकते, ठीक है। आई विल बी वेरी डायरेक्ट, आई हैव वर्कड अंडर अ गाइड, आई नो हाउ थिंग्स आर। यू कैनॉट डिनाई योर गाइड इन एनी केस, इन एनीथिंग। इट्स नॉट वर्थ द प्राइस, ठीक है। राइट, बात ये बिल्कुल सही बात है सर, बट ये तो बिल्कुल है कि आपका जो गाइड बोलेगा वो कोर्सेस आपको लेने पड़ेगा करके। राइट, अब कुछ कोर्सेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। IIT मद्रास में लाइक हैप्पीनेस करके कोर्स है ये। अब ये IIT दिल्ली में भी एक हैप्पीनेस वाला कोर्स है, ये आप कोर्स ले सकते हो, ओके। और ये इसको इसमें आपको मना नहीं करेगा, और इसमें ना या एग्जाम एंड होगा ना गाइड कुछ मना भी होगा। नहीं करेगा और गाइड अप्रूव भी नहीं करेगा। वो बोलेगा तुम्हें करना है तो करो, पर आई वांट यू टू डू दिस कोर्स, तो ये कर लो। ही विल अरे टेल कि कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ये कोर्स कर लो, तो वो करना पड़ेगा। फिर तुम हैप्पीनेस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, दैट वोंट रियली मैटर। राइट, राइट, बिल्कुल सही है। तो दूसरी चीज इस बात करते हैं, तो IIT मद्रास में MS का भी कोई टेंशन नहीं है। लाइक सेकंड सेमेस्टर से आपका MS का थीसिस वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर आपको वहां से करना पड़ेगा, थीसिस लिखना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर से। ओके, अब IIT कानपुर में भी सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, IIT दिल्ली में भी सेकंड सेमेस्टर से आपका थीसिस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो कोर्स वर्क आपको पहले सेम में कंप्लीट करना है। IIT कानपुर में पहले सेमेस्टर में मिनिमम कोर्स आपको 3 करने होते हैं, बट IIT मद्रास में ऐसा जरूरी नहीं है, आपका 2 कोर्स भी कर सकते हो पहले सेमेस्टर में। टोटल 5 सेमेस्टर मिलते हैं, जहाँ पे पांचों सेमेस्टर तक के आपको स्टाइपेंड मिलेगी। अगर आपका थीसिस 5 सेमेस्टर से एक्सटेंड हो जाता है MS का, फिर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब 5 सेमेस्टर है, 5 सेमेस्टर में आप एक सेमेस्टर में एक कोर्स करो, डजेंट मैटर, ये मद्रास में फैसिलिटी है कि आपको एक कोर्स भी कर सकते हो। इवन मैंने खुद ने वैसा किया था। आई मैं एम सॉरी, आई एम सॉरी अगेन। If you are doing one course in one semester, your guide will be extremely disappointed you, and trust हाँ, me, your degree वो will go to hell. वो Don't डिसअपॉइंट do होगा, these things. बट हाँ, कर सकते हैं ये complete चीज। things first. See, I'll be very direct. It's a master's degree. It's in IIT. You will be under stress. You will be under tension. If you are saying things like कि वहाँ पे टेंशन नहीं होता, नहीं, there will be stress, there will be tension.
बीटेक के बाद अनप्लेस थे, मास्टर्स के बाद फिर से अनप्लेस रहोगे तो क्या करोगे? So whatever it is, take it seriously. MS, I will, I'm saying this again, MS is harder than MTech, which is the reason MS has lower cutoff. People tend to go for MTech. Someone with a higher score of let's say 900, he won't go for MS at IIT Madras. He will go for MTech at IIT Bombay. Reason big, MTech is easier, MS is harder. Telling you again, it depends on guide to guide. I have seen some guide who didn't even looked at their, their thesis. My guide, he went through the thesis, he went through every line, he went through everything that was written. He shared it with, my thesis went to review. I got a review. My review was, it was whatever I got in review, it was clearly reflecting that the reviewer has went through every line. Point being, MS डिग्री को हल्के में मत लो. It's hard. टेंशन की बात है वहां पर. It could be hard. बिल्कुल। गाइड हाँ, गाइड देखो it बता depends देता on हूँ एक और guide. चीज, गाइड जो है डिपेंड्स ऑन द गाइड टोटली। उसके बाद अभी आईआईटी बॉम्बे की आपने बात करी, तो वैसे आईआईटी बॉम्बे में एमएस नहीं होता है, वहाँ पे होता है एमटेक आरए होता है। ओके, एमटेक आरए उसका अलग से फॉर्म नहीं भरना होता है, वो आईआईटी बॉम्बे का जब आप लोग 10 प्रेफरेंसेस डालते हो तो उसी में आपका फॉर्म भरना होता है, मतलब एक सिलेक्ट करना होता है एमटेक आरए का। ठीक है। अब आईआईटी बॉम्बे के आरए की बात करें तो guys थोड़ा सा वहाँ पे वो टफ है। ओके। आप एमएस को आप ये कह सकते हो इट इज जस्ट अ मिनी पीएचडी, मिनी पीएचडी के नाम से आप लोग इसको कह सकते हो। तो एमटेक आरए जब आप करते हो आईआईटी बॉम्बे से, इट इज लाइटर टफर, वो टफर है। ओके, लिटरली आई विल बी सेइंग इट इज टफर देन आईआईटी मद्रास आल्सो। ओके। देखो मैं थोड़ा कानपुर के बारे में बताता हूँ। मैंने दोनों आईआईटी में मैं रह चुका हूँ, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। ओके, और आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे में तो आना जाना मेरा लगा ही रहता है ना। मैं तीनों तीनों चीज, तीनों बच्चे, मतलब तीनों बच्चों से मैं मिलते रहता हूँ, मेरे को पता है क्या चीजें है। देखो पहली चीज अगर हम बात करें तो सीधा सिंपल बताता हूँ, आईआईटी कानपुर का जो एमएस पीएचडी दैट इज फार टफर एज, उसके बाद में जो टफ है वो आईआईटी बॉम्बे है। उसके सॉरी, उससे कम टफ आईआईटी बॉम्बे है और उससे कम टफ आईआईटी मद्रास है। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सुसाइड्स इन आईआईटीज। आईआईटी मद्रास में जो सुसाइड्स हुए थे तब से चीजें थोड़ी हल्की हुई है। ओके, ये दो चीज 2 साल में डिफर हुआ है, 2 साल में ये चीजें मतलब काफी चेंज हुआ है, काफी चेंज हुआ है। ओके, सुबोध सर पास्ड आउट इन द ईयर 2024 में। ओके, एंड इट्स 2020। 22. हाँ मैं 20। 22 में पास आउट. सर 2020 अब 20 से 22 है क्या बैच? हाँ. अच्छा 20 से 22 बैच है। 19 से ओके, 22. 19 से 22 बैच आपकी। ओके। हाँ तो गैस मैं तो मतलब 22 में एंट्री लिया था कानपुर में, 22 से 24। ठीक है। एंड सो ऑन, फिर उसके बाद में मद्रास में। तो तो थोड़ा चीजें चेंज हुई है अब। 20 से 22 में मतलब अगर बात करें कि 22 में ही सुसाइड्स हुए। पहले रूल था एक आईआईटी कानपुर में कि टर्मिनेशन हो जाता है अगर आपका 6 पॉइंटर से नीचे आता है। अब वो रूल भी हट चुका है। अब आईआईटी दिल्ली में एक, सिर्फ आईआईटी दिल्ली में वो रूल बचा है कि अगर आपका 7 पॉइंटर से नीचे आता है तो ही आप टर्मिनेट हो जाते हो। सिर्फ आईआईटी दिल्ली में वो रूल बचा है, बाकी किसी आईआईटी में वो रूल नहीं है। अब पहले के जैसा स्ट्रिक्ट अब थोड़ा सा हल्का हो चुका है। ओके, बिकॉज ऑफ सुसाइड्स मैं बोल दे रहा हूँ ये चीज। ठीक है। तो आपको अगेन लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो हल्की चीजें वो आप पे आएगी ही आएगी करके, ठीक है? Nobody in IIT Kanpur mechanical department will budge. I'll tell you directly. They have a very good level of expectation and they will follow it. Kanpur mechanical especially. It's fairly infamous for but the output that one gets after coming out, the respect that you get in industry, that is definitely excellent. So yeah. uh, I'll then now get some other doubts. uh, हाँ, जो इंटरव्यूज होते हैं कब होते हैं? मोस्टली इंटरव्यूज आर शेड्यूल्ड मच बिफोर स्कोप के जो फर्स्ट राउंड है, मोस्टली दे आर इन सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल में आपको इधर उधर भागना पड़े, सो बी रेडी फॉर दैट एज ओके वेल. सर, एक डाउट है अमन कुमार यादव का यूट्यूब पे कि सर आप ये बताइए कि न्यू आईआईटी में एडमिशन लेना सही रहेगा क्या, क्या प्लेसमेंट है क्या? तो गाइस आप लोग हमारा पोस्ट ग्रेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे गाइस आप लोग को ये आईआईटी के कट ऑफ्स, आईआईटी के प्लेसमेंट के कट ऑफ्स, ये सब चीजें अवेलेबल है एक एट वन प्लेस। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जाकर एनरोल कर लो। फ्लैश सेल अवेलेबल है अभी पोस्ट ग्रेड 2025 में, जब तक स्ट्रीम चलेगा। आप लोग कोड यूज कर सकते हो मार्गदर्शन, एंड यू कैन एनरोल एट 1499, इट्स प्राइवेट कोड। और जैसे ही आपका स्ट्रीम खत्म हो जाएगा ये कोड भी आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब बंद हो जाएगा ये कोड। तो आप लोग को सब चीज मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब आरटीआई का कट ऑफ आपको मिल जाएगा। यस। ठीक है. सो व्हाट इज हाउ इज एमटेक आर आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट, रोहित का सवाल है. सो इट इज सेम एज एमटेक, नो डिफरेंस. नो डिफरेंस। It's a 3-year degree, so the placement will happen at
after 2 year in your final year. I had a friend in Bajaj who did his M.Tech RA from IIT Bombay. So there is no difference. M.Tech RA, again, it is exactly same as MS. It is at the same level only. Just it will have lower cutoff, but again, it does not have a fixed number of seat. We don't know what will be cut off. We don't know whether you will be called for interview or not. ये देखो सर, एक डाउट है बच्चे, एक एक ये यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, टीएस पीएससी बैचेस सर आपका कोर्स परचेस करके 10 डेज हो रहा है, अभी तक 1-to-1 काउंसलिंग नहीं हुआ। भाई मेरे, ये जो ग्रुप आपको लग रही है ना, ये जो जूम की लिंक है, ये आपके ग्रुप, इस जूम के लिंक पे आओ, ओके। और मुझे पता है कि आप फेक 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 आदमी हो, वो आप पेड के स्टूडेंट नहीं हो, ये हमें पता है, ठीक है। ये चीजें हमको समझ में आ गई है। जो पेड के स्टूडेंट है ना, ये यूट्यूब या जूम पर बच्चे अवेलेबल है, जूम पर दिख रहे हैं, पिंटू यादव, सिद्धांत बम्बड़े, साहिल कड़ू, चेरी, श्रीनिवास, ये सब पेड के स्टूडेंट है, ओके। तो ये सब आ रखे हैं। ये हमें पता है किसका 10 दिन है, हम लोगों ने 10 दिन से तो हमने भाई हाउ खत्म हो चलो चुका है काउंसलिंग। चलो छोड़ो, ओके, चलते श्योर, रहते हैं। यस हाँ, सर। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बार्क इंटरव्यू। थोड़ा रुक जाओ अभी। रिजल्ट आने दो। रिटर्न डेफिनेटली का हम भी लोग रिजल्ट आया नहीं है। वंस दैट इज आउट विल डेफिनेटली कंडक्ट दैट। आई वाज एट बार्क, आई डिड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट itself, so I have a good experience. I have been also taking in interviews since last 2.5 years almost, so I have good experience in taking mock interviews as well. So once that is there, we will have a batch dedicated to bark as well. डोंट वरी On गाइस, चयन बैच इज लॉन्चिंग। चयन बैच, अभियान बैच आपकी लॉन्च हो चुकी है, अभी ओएनजीसी इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारा शुरू हो चुका है। जैसे बीआरसी का रिजल्ट आएगा, वैसे हम लोग बीआरसी की बैच भी लॉन्च कर देंगे। एंड वी आर ऑल द पीएसयू एक्सपर्ट्स इन आवर टीम। मार्गदर्शन इज अ टीम, मार्गदर्शन इज अ प्लेटफॉर्म, a startup by IIT Kanpur, and all the experts and mentors are from IITians and PSUs, okay। तो आप लोग को अगर ओएनजीसी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, या फिर किसी भी आईओसीएल हो गया, जो आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एमआरपीएल हो गया, बीआरसी, एनपीसीआईएल, डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन बैचेस यहाँ पे चलती है। और ऑल द मेंटर्स आर आईआईटियंस एंड पीएसयू एक्सपर्ट्स, ठीक है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम बार्क, एनपीसीआईएल, एवरीबॉडी, ओके। सेल, एनएफएल, कहाँ कहाँ से नहीं है। इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं क्या? मोस्टली यस, नहीं, मोस्टली नहीं। आजकल इंटरव्यू ऑफलाइन हो रहे हैं, बट देयर माइट बी। कोविड के वक्त में सब ऑनलाइन लिए थे, कुछ इंटरव्यूज अभी भी ऑनलाइन है, बट डोंट यस, एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी ऑनलाइन। कुछ कुछ जगह पे अभी भी ऑनलाइन है, पर आई टोटली एग्री। यस सर, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हम्म। ऑनलाइन है। आईआईटी दिल्ली एनर्जी साइंस का ऑनलाइन होता है, आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन होता है, आईआईटी मद्रास केमिकल का ऑनलाइन है, ओके। उसके बाद हाँ, आईआईटी मद्रास ओशन का भी ऑनलाइन है, ओके। ओशन इंजीनियरिंग का। सो पर देर इज अ डाउट। MS and COPE, sorry, MS and COPE has no relation. Your MS admission, it will not reflect in COAP. COAP is only for M.Tech, so don't expect or don't correlate these two. MS, whether you are selected or not, either you will get in your email or it will be reflecting in that college application portal. So if you are applying for MS, you need to be, updated with the emails as well as the college application portal. MS admission or MS things will not reflect in COAP. COAP is only for M.Tech. चलो, M.Tech RA. Does Hyderabad has MS? I don't think it has MS. हाँ, कुछ एक आध ये ब्रांच में होगा तो होगा, वेनम अदर टेक देन। वेनम टेक अगर मैं वेनम टेक, आप ना अगर कमेंट कर रहे हो तो आप अपने नाम से कमेंट करिए, आपका क्या नाम है, ओके। और अगर पेड स्टूडेंट हो आप, और आपने काउंसलिंग आपकी शेड्यूल नहीं हुई है, तो आप मेरे को अभी तुरंत मैसेज करो, मैं ठीक है, अभी के अभी रात के 12 बजे आपकी काउंसलिंग करवा दूंगा। ठीक है। पर पर रियल नेम से आओ, ओके। आई नो यू आर नॉट रियल, ठीक है, ये मेरे को पता है चीजें। वरना हमारी काउंसलिंग प्रॉपरली 1-to-1 चल रही है। हमें समय चाहिए, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग, हमें भी तो समय चाहिए ना। आप आज एनरोल करते हैं तो भाई तुरंत तो ही काउंसलिंग करेंगे। 24 घंटे तो हमें दीजिए, है ना। तुरंत आप मैसेज कर, रात के 12 बजे सर काउंसलिंग करवाऊंगा। ठीक है, लेट इट बी, छोड़ो। सर, वन मोर ईयर ऑफ प्रिपरेशन, विच इंस्टीट्यूट शुड आई चूज सो दैट देर इज नॉट मच प्रेशर? डेफिनेटली कानपुर तो मत ही लो, बिकॉज कुछ हो ही नहीं पाएगा। कमिंग टू मेन टॉपिक, देखो, आई रियली डोंट रिकमेंड डूइंग दिस, बिकॉज वंस यू गो इनटू एन IIT, वंस यू गो इनटू M.Tech, थिंग्स विल बी चैलेंजिंग। तुम्हें कोर्स वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लैब एंड along with that स्टडी भी करनी पड़ेगी। Most of you हम्म। people, you have been doing get preparation full time, other than some final year people. Most of you are doing full time, and things can go wrong in 3 hour window. So
कंसिडर कि तुम किसी हम्म, नॉट सो गुड प्लेस में एडमिशन ले लिए, गेट प्रिपरेशन किए, ऑब्वियसली यू डिडंट पुट योर फुल एफर्ट इन एमटेक, वहाँ का पॉइंटर अच्छा नहीं आया, एंड देन यू गो इन टू गेट एंड यू मिस अप योर गेट एज वेल, विच कैन हैपन, दिस ईयर मोस्ट ऑफ द पीपल हम्म, दैट हैपन इट सेल्फ, 10 मार्क 20 मार्क सिली मिस्टेक्स में ऐसे ही गायब हो जाते हैं। व्हाट यू विल डू? ना तुम्हारे पास एमटेक रहेगी बिकॉज उसका सीजी डाउन है, ना तुम्हारे हाथ में गेट रहेगा। सो इट्स नॉट रियली रिकमेंडेड टू डू दैट। कैन यू डू दैट? यस। डू पीपल डू दैट? यस। और कुछ लोग जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए चले जाते हैं पेपर देने, और उनका पेपर अच्छा आ जाता है। मैं अपने सेकंड ईयर में ऐसे ही गया था, साइकिल से गया था, 5 किलोमीटर पास में था सेंटर, तो पेपर दे के आया। आई हैड आई विद नो प्रिपरेशन आई गॉट द बेस्ट रैंक सो फार in that year when there was no preparation. Point being, you can do that, but I don't really recommend it. But if you want some हम्म। less pressure MTech, you can choose mid IITs or new IITs. वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा. You can take up some good some easy courses. Talk to senior कि कौन सा courses easy रहेंगे, and then you can move ahead from that. एक और चीज बोलना चाहूंगा गाइस, अभी हमारे घर मेरे साथ में एक बंदा था, लाइक हमारा स्टूडेंट ही था, लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेड 2024 बैच का, गणेश करके नाम था उसका, गेट स्कोर 498। ही टुक एडमिशन जनरल कैटेगरी, ही टुक एडमिशन इन आईआईटी मद्रास एमएस। ओके, एमएस में तैयारी करी उसने, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना वर्कलोड नहीं होता है, उसने एमएस लिया, ज्वाइन किया, और अभी एचपीसीएल में वर्किंग है, तो एचपीसीएल में सिलेक्ट हो गया था वो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पीएसयू की तैयारी नहीं कर सकते हो, आईआईटी में जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं, तो हो गया वो सिलेक्ट। दूसरी चीज सर, एक डाउट है नीता नीता अग्रवाल का कि आईआईटी मद्रास में एमएस के फीस कितनी है। तो मैं नीता अग्रवाल आपका डाउट लेना चाहता हूँ। देखो फर्स्ट मैं यार आपको देखो, जस्ट एक मिनट रफली यार। बता देता हूँ मैं सर। नहीं, जस्ट वन थिंग। यार सी, ये फीस कितनी है, ऑब्वियसली यू गो टू पोर्टल एंड सी इट ना, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है सर, you उनको you समझ need में to नहीं आ रहा है। understand, you want to go into IIT for a masters and you are just unable to even go through portal. राइट, राइट, राइट। तुम भी थोड़ा अपने साइड से सर्च करो ना। फीस क्या, मैं बता दूंगा 40,000 है, वहां पे जाके 60 निकले, क्या करोगे? थोड़ा खुद भी बिल्कुल। थोड़ा सर्च करो, तुम जहाँ अप्लाई कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यू पीपल आर फ्री, यू डोंट हैव अ फुल टाइम जॉब। आई मीन, बराबर। गो थ्रू हम तो ब्राउजर्स, गो थ्रू वेबसाइट, गो थ्रू, राइट। जस्ट टाइप करो IIT मद्रास MS फीस, तुम्हें मिल जाएगा। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली हर, डोंट टेक इट पर्सनली, बट पॉइंट बेइंग, ओके। डू सम रिसर्च ऑन यूर साइड। दिस इज नॉट बिल्कुल। समवन एल्स जॉब टू टेल यू कि फीस कितनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्स्ट फीस है वो तुम्हारे पास होगी नहीं, वो तुम्हें घर से मांगनी पड़ेगी। सेकंड फीस के वक्त थोड़ा स्टाइपेंड जमा हो जाएगा, तो हैव सम दूसरी। हैव सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड टू सर्च ऑल दीज थिंग्स। डोंट राइट, एक्सपेक्ट समवन एल्स टू कम टू टेल यू कि कितना है, या फिर सर इसमें मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर सकता हूँ, या सीट्स कितनी है। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। राइट, राइट, राइट। पोर्टल पे जाओ, वहां पे देखो। बिल्कुल। अब सर आज के टाइम पे बच्चों को बिल्कुल इन किस हैंड एमटेक चाहिए, करोगे तुम इन हैंड बताओ चाहिए मुझे। चीजें, इन हैंड चाहिए चीजें बच्चों को। फिर भी मैं इनका डाउट ले The लेता हूँ point क्योंकि is कि if I थोड़ा have ना promised सर, that I will do सर that. मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आईआईटी मद्रास में चीजें ऐसी है ना, वहाँ पे दो अलग अलग फीस भरनी पड़ती है, अपने कानपुर के जैसा फीस नहीं है। कानपुर में एक ही जगह पे अगर जैसे अपन 43,000 भरते हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल और कॉलेज का फीस एक ही जगह पे आ जाता है। बट मद्रास में ऐसा नहीं है सर। मद्रास का मैं आपको बताता हूँ सिस्टम क्या है, लाइक आपकी ठीक जो है, कॉलेज की फीस है, इट I इज would say ट्वेंटी थ्री let it थाउजेंड be, let her I mean let people figure it यस, out. यस I सर। mean let's take up सर some लेट मी क्लियर, important doubt. लेट मी क्लियर, लेट मी क्लियर सर, चलेगा कोई चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, देखो गाइस, आईआईटी मद्रास में हर साल फीस बढ़ती है, इस साल भी फीस बढ़ी होगी, आई डेंट सीन द फीस शेड्यूल। बट मैं लास्ट सेमेस्टर की बताता हूँ, ये जनवरी सेमेस्टर की बताता हूँ। तो गाइस जो फीस था एमएस का, दैट वाज 23,000। आपका कॉलेज फीस था 23,000, और 37,000 था आपका हॉस्टल का फीस था। ओके, हॉस्टल का फीस था 37,000। ओके, तो एक सेमेस्टर की बात करो, दिस इज फॉर 1 सेमेस्टर ओनली, 23,000 फॉर कॉलेज, कॉलेज फीस, और 37,000 आपका हॉस्टल एंड मेस का फीस है। ओके, ये चीज था क्लियर। अब तो अब शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ, एससी कैटेगरी को 5,000 कम हो जाएगा, एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे, SC ST PWD। नेक्स्ट आउट। ठीक है। सो देर इज डाउट फ्रॉम अंकित, वेरी स्पेसिफिक डाउट, कि इन IIT मद्रास पोर्टल देर इज ऑप्शन फॉर फुल टाइम MS और पार्ट टाइम MS विद जॉब। सो हाउ एग्जैक्टली इज दिस पार्ट टाइम MS विद जॉब? टू बी ऑनेस्ट, ये जो ऑप्शन है ये उन्होंने रिसेंटली ओपन किया है, सो मुझे भी पता नहीं। आई विल गो थ्रू ब्राउजर, आई विल टेक अ लुक एट इट कि क्या है, एंड देन लेट्स सी व्हाट इट इज। ठीक है। हाँ देन हिज सर, पार्ट स्कोर टाइम इज। एमएस का मैं बता देता हूँ बच्चों को। पार्ट टाइम एमएस का मुझे आइडिया है।
तो गैस जैसे कि ऐस, आईआईटी मद्रास का जो पार्ट टाइम एमएस है, यहाँ पर जो भी पार्ट टाइम एमएस में सिलेक्टेड हुए हैं, ये मोस्टली आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क, और आज आईआईटी दिल्ली का भी मैंने इसके ऊपर में so चर्चा करी it's है। about कि तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है which is nearby IIT, then you can enroll for part time MS. It's not कि you will go there and then you will get a job and then you can enroll. You have to have a job already with you know नहीं सर, right. देखो जैसे जो भी लोग होते हैं ना आईआईटी में, इनोवेशन हब में जो होते हैं, लाइक अपने इधर में सिडबी है, आईआईटी कानपुर में सिडबी है, वैसे ही आईआईटी दिल्ली में आरएनआई पार्क, रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क है, और आईआईटी मद्रास में अपना सुधा एंड शंकर इनोवेशन हब है। ओके, और आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क है, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, इसमें बेसिकली ये जो रिसर्च पार्क होते हैं, यहाँ पर कंपनीज होती है, ओके, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वही लोग पार्ट टाइम एमएस में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये भी चीज क्लियर करता हूँ, पार्ट टाइम एमएस या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, दीज आर कॉल्ड एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एज वेल। ठीक है, सो दे इन लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। और या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स होती है लाइक बीआरसी, एनपीसीआईएल, आईओसीएल, यहाँ के बच्चे अगर यहाँ के बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट पीएसयूस अलाउ करती है तो डेफिनेटली यू कैन गो आउट। बेसिकली बाहर इन कैंपस में। शॉर्ट तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो डोंट थिंक अबाउट इट. यस, Think of full time. ठीक है. My score is राइट। lagging by 30-40 by admission in IIT Warangal. So I decide to go for self finance. Do you know what to prepare for the written and interview? Simple gate level. NIT Warangal ka written hai, so I don't think it will be even at gate level. It will be somewhere below it. But gate, just previous year gate, that should be enough, I would say. Other than that, रिटर्न में यूजुअली गेट और मैथमेटिक्स इतना ही पूछा जाता है. दे डोंट रियली आस्क एनीथिंग मास्टर्स लेवल थिंग्स. ओके कूल देन एक्सिस रिप्लेसमेंट. और एक मिनट, लेट मी कम. सर ये फर्जी पीडिया वाले ना कमेंट सेक्शन में आ गए हैं। अच्छा, इनका धंधा लेट इट अपन ने बी. शायद बंद कर दिया ना, तो सर ये कमेंट कर रहे बेकार का, सर पता है कि 1-to-1 काउंसलिंग नहीं हो रही। भाई सबकी 1-to-1 काउंसलिंग हो चुकी है यार, ऑलमोस्ट हो चुकी है। गिनती के भी 20-30 बच्चे बचे हैं पूरे। फिर 350 बच्चों में से 20-30 बच्चे बचे हैं सिर्फ। और आप लोग मतलब ये फर्जी पीढ़ियां कहाँ से आगे पता नहीं, बच्चों को सर डाइवर्ट कर रहे हैं, पता है ये लोग। आईआईटी भिलाई में डिजाइन कैसा होगा? सी इट्स अ न्यू आईआईटी, वेरी न्यू आईआईटी, सो फर्जी पीढ़िया। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इट. एनी न्यू आईआईटी अदर देन maybe CSIT, placement is just decent. It's not too great, because see, obvious है, कोई भी company they will want people from higher colleges. That being said, in case you don't have any other option, it's an option you should try for. That's all I can say. They don't have good placement, to be honest. People do get placed, but again, the companies come, they could be local in nature, or they might not offer you that much when it comes to compensation. So mid IITs are decent, top IITs are obviously good, and then when it comes to new IITs, M.Tech side not so good. One strategy that you could do is take an admission this year, prepare a little bit for GATE, give it again. If you get a good score, do an M.Tech at higher IIT. In second year, you will be able to risk more as well, so you can go till latter rounds to get something. Tell about Guwahati MS Energy. I think Guwahati has MS in only energy, if I'm right, and Roorkee has no MS at all. नो, वन क्वेश्चन केम सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड? तो स्पॉन्सर्ड वो होते हैं लाइक जैसे कि आपके जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, इसरो, बीआरसी, डीआरडीओ, ये लोग आप लोग को भेजते हैं आपका एमटेक करने के लिए। लाइक कोल इंडिया में भी ये फीचर है, कोल इंडिया आप लोग को 2 साल के लिए पे करता है अगर आपको आपके हायर स्टडीज करनी है तो। ओके, और वैसे डीआरडीओ, इसरो और बीआरसी जैसे इंस्टीट्यूट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आप लोग को भेजते हैं कि भाई तुम आईआईटी में जाओ और आरएनडी करो इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर में। इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एडमिशन, स्पॉन्सर्ड। इसका और भी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ही दोस्त है आईआईटी मद्रास में, गरुड़ा में था वो। आप लोग को पता होगा गरुड़ा कंपनी के बारे में, गरुड़ा एरोस्पेस, राइट? तो गरुड़ा एरोस्पेस का जो व्यक्ति था वो आया था करने के लिए, तो उसको कंपनी ने भेजा था आईआईटी मद्रास से एमएस करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड एडमिशन। और सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो होता है जहां से आपको खुद का पैसा लगाना है, लाइक आईआईटी हैदराबाद में आपके काफी सारे सेल्फ स्पॉन्सर्ड एडमिशन है, बहुत सारे, लाइक सस्टेनेबल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया। दोज आर कॉल्ड सेल्फ स्पॉन्सर्ड। लाइक इसमें भी मेरी एक दोस्त थी, पूजा मूल्य नाम है उसका, सर्च कर सकते हैं, शी वाज सेल्फ स्पॉन्सर्ड। उसने केमिकल से थी, बट उसने मतलब एआई से उसने किया बेसिकली, एआई से अपना एमटेक किया और पैसा खुद का लगाया, है ना।
12 लाख रुपए उसने फीस भरी, और आईआईटी जोधपुर में भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, मतलब खुद का पैसा लगाना है अपनी जेब से। ओके। तो बट अगर पैसा लगाते हो तो वो आईआईटी में लगाओ जहाँ पे आपका आरओआई, मतलब जो कि रेट है वो आपको मिल जाए। लाइक आईआईटी हैदराबाद, उसको 18 लाख का पैकेज भी लगा, है ना। 12 लाख अगर उसने लगाए भी है तो 18 लाख का पैकेज लगा, और नॉन कोर में लगा। तो उस आईआईटी में जाना जहाँ पे आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड मिल रहा है, अदरवाइज यू गो विद स्पॉन्सर्ड ओनली, स्पॉन्सर्ड एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट डाउट सर। चलो ठीक है. So tell me about Guwahati MS Energy. If I get shortlisted, will I be called on campus for interview? If I'm right, Guwahati MS इसी साल introduce हुआ है, so even I don't know whether they are online mode, offline mode. Usually IITs tend to go for offline in campus, in person mode only. So just I mean, we'll have to do the wait and watch. देखते हैं. गुवाहाटी थोड़ा दूर है, so I can understand आना जाना 15-20 हज़ार चले जाएंगे, but let's see what happens. बाकी आप लोग गाइस, क्या नाम है, अभिजीत सर से पूछ सकते हो। ओके, ही इज इन आईआईटी गुवाहाटी ओनली, जो गाइड कर रहा है एमईपी एक्सी को। तो आप उनसे पूछ सकते हो। ओके, उनको भी काफी अच्छा खासा Uh, नॉलेज है। ठीक है, Vinit, let the shortlist come, then we will see. Okay, I mean, यस। right now, obviously, you won't be having any tickets and all to go and come. Let the shortlist come, then we will see accordingly. Because, see, unfortunately, even we don't know how many MS seats are there. Internal sources can help, but, not at student, at professor level or so. Uh, जो चीज़ें पब्लिक होती है, कुछ चीज़ें पता चल जाती है, but other than that, we really don't know. टॉप आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है? फ्यूचर में स्कोप है क्या उससे एमटेक करने के बाद? सी, obviously any company, they will prefer core guys over interdisciplinary, no doubt. There are more companies for core uh, branches than interdisciplinary. For example, mechanical, you can count maybe what, 10-15 companies easily. But for interdisciplinary, let's say sustainable energy, you might not be able to count maybe two or three. So obviously placement will not be that good as much as core, but there are a lot of companies who are open to all, who are open for everyone. Mostly those who are related to बेसिक लेवल कोडिंग, या फिर बिग फोर की कुछ फर्म्स हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज होती है विच कम इन बल्क, दे वांट a lot of people to join them. In that case interdisciplinary से placement हो जाता है. If you are doing good there, if you have good CG, if you have good skills, you can definitely get placed. So interdisciplinary का placement obviously core से बुरा होगा, no doubt, but on the that side it's not that bad कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा. I have a lot of friends in interdisciplinary, they are doing well now. So obviously you have to study there once you go there. So other than taking very low college in core, it's better you take interdisciplinary in top 5 top 7, because वहाँ पे तुम interdisciplinary हो, वहाँ से भी placement हो ही जाएगा if you are doing good. Cool. Sid, aerospace choice visible for mechanical engineer in terms of placement. So see, aerospace and mechanical के बारे में, so obviously जो कंपनी मैकेनिकल के लिए आ रही है, they may or may not allow aero people to join them. For example, कुछ कंपनीज हमारे यहाँ जो आई थी, they allowed both. कैटरपिलर हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, एयरबस हो गया, they allowed both. But some companies, they were allowing only mechanical guys. For example, Lam Research, Enphase Energy, Bajaj Auto, they were allowing ExxonMobil, they were allowing only ME people. So obviously ME will have more companies than Aero does, but on the same side, Aero does really well. Aero has a lot of coding companies open. So Aero is better than interdisciplinary, but obviously mechanical will be sort of better than Aero. And no, there are इसरो नहीं आती है हायरिंग के लिए एरो में, कोई रॉकेट की भी कंपनी नहीं आती है. बेस्ट यू कैन होप फॉर इज बोइंग एंड एरोस्पेस. अदर देन दैट नहीं आते हैं. एमटेक कॉम्पिटिशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स एम आईआईटी मद्रास. देवाशीष, तुम्हारा तो अच्छा स्कोर है, कुछ 700 प्लस स्कोर है. मद्रास मैकेनिक्स मतलब देखो थोड़ा प्रिफर, यू कुड गेट इवन बेटर. इवन आई डोंट नो इंटरव्यू होता है कि नहीं, सो देखना पड़ेगा. मुझे भी नहीं आइडिया. हाउ टू गेट स्पॉन्सर्ड एडमिशन, यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्पॉन्सर्ड एक्चुअली. सो सेल्फ स्पॉन्सर्ड के जो एडमिशन है वो नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं, रिजर्व होते हैं. ये पोर्टल से ही पता चलता है. अदर देन दैट नहीं. मतलब other than that there may or may not be any way. That depends on IIT whether they want to take in self-sponsored people or not. Hmm.
नाइस। और कुछ, अगर कुछ यहाँ पर अच्छे डाउट्स है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आई वोंट बी टेकिंग एनी स्कोर रिलेटेड डाउट सर, इतने स्कोर पे हो जाएगा। आई वांटेड टू टॉक जनरल एक्चुअली। सर एमएस हार्ड होता है क्या? एज आई सेड यस, इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड डिग्री, यू हैव टू डू रिसर्च, थिंग्स कुड बी हार्ड एंड इट इज़ अ लॉट मोर डिपेंडेंट ऑन योर गाइड. If it's lenient, you will have best years in your life. If he is, not so lenient, uh, you know what happens. सर कृतिका का डाउट है कि इनको इनको क्या नाम है, प्लेसमेंट के ऊपर में चीजें चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पे अगर आप एनरोल नहीं है तो आप एनरोल कर लीजिए। आप लोग को पूरा आरटीआई का डेटा दिख जाएगा, जिसमें एमएस एमटेक पीएचडी सबकी कट ऑफ से लेकर आपका प्लेसमेंट का डेटा सब हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्रॉपरली अवेलेबल है। हर एक आईआईटी का अवेलेबल है, हर एक आईआईटी का आरटीआई का डेटा। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, अगर आप लोग एनरोल नहीं हो तो एनरोल कर लीजिएगा, आपको एक ही जगह पे सब चीज मिल जाएगा। ठीक है। How is Roper mechanical? See, Roper is doing really well. It is on the level of, let's say, Hyderabad. So mid IITs में Hyderabad, Indore and Roper, they are doing excellent. They are as good as the top 5, top 7. So Roper M.Tech mechanical, it's definitely good. Good labs, good professor. Placement भी वहाँ का अच्छा है. For example, I had a junior there. She got placed in Pratt and Whitney last year. She was into manufacturing actually. तो वहां से भी वो प्लेटन विटनी में जा पाई. सो दैट सेज रोपर इज गुड. एमएस जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने ऑलरेडी बताया. देन हाउ इज रोपर का बता दिया मैंने. डीए का कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं. इंटरव्यू, हाँ सर, कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स आईआईटी मद्रास कितने राउंड तक पढ़ सकता है, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या है तो. लेट मी जस्ट गो थ्रू योर स्कोर एंड ऑल, देन आई विल बी एबल टू टेल यू. बार्क इंटरव्यू के बारे में बाद में लेता हूँ मैं, ठीक है. अमृत अंशु का कॉल है. इज इट वर्थ टू अटेंड इंटरव्यू एट 788 गेट्स फॉर. अमृत अंशु, आपका रैंक कितना है 788 पर? आई डोंट नो, मे बी 700, 600. इफ इट्स अबव 500, देर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर. आईएससी बैंगलोर में. एमएस गेट स्टाइपेंड, यस, 12,400. एमएस एट इंदौर स्पेस साइंस प्रोग्राम, यस. रेणुका का क्वेश्चन है. यस, इंदौर. इंदौर में है या एमटेक है, एमएस है, आई फॉरगॉट एक्चुअली. बट इन एनी केस स्पेस साइंस आई थिंक रुड़की में भी है. डोंट एक्सपेक्ट सम स्पेस कंपनी विल कम एंड हायर यू. डोंट एक्सपेक्ट कि प्लेसमेंट विल बी अमेजिंग. नो, दे डोंट हैव दैट वेल ऑफ अ प्लेसमेंट बिकॉज एज यू कैन एक्सपेक्ट, we don't have companies which work in space sector so far, and even if we do something like Agnikul Cosmos, they don't really hire much people. Even if they come, they will hire what, one or two people, something like that. So considering that, is it a good program? Yes. Is it placement oriented? Not so much. थ्री वालों के डाउट लेंगे या नहीं, मैं अभी ले रहा हूँ, जितने हो पाए I'll do that. Devashish, I'll share my bartender experience definitely. Let that phase come in. Right now we're into post gauge because things are running very fast, so that's why. Sir, can we drop MS if we get better opportunity career-wise in future? I don't know what do you mean by we drop MS. But point being कि obviously you can, I mean, see, MTech and MS का तो same ही value है market में. There is no other value. I would say MS at times might be more valuable. For example, the role I am in right now, software development, they wanted someone who has done research in multi-phase area. So my master thesis that was in multi-phase, and that's the reason I am here. So at times it could happen that your MTech, your MS research topic, whatever it was, it get highlighted. So that might help you in getting something, but it's not sure. You can't think that much. You can't think that ahead कि क्या होगा. इज इट पॉसिबल टू डू एमएस और पीएचडी विदाउट गेट? एमएस का तो मुझे आइडिया नहीं, पीएचडी होता है, यस. इन दैट केस दे लुक आउट योर पॉइंटर. इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री देन दे लुक आउट योर मास्टर्स पॉइंटर एज वेल.
Those who want to leave, they can. I mean, I'm just taking some doubts of everyone else. So Khushbu says civil engineering rank is 486 OBC. PSU सिविल का आजकल आती नहीं है सच, मतलब सच में नहीं आती है. सो आई डोंट, आई मीन इट्स हार्ड टू टेल unless and until IOCL has a good number of vacancies. Other than IOCL, there is hardly much PSUs when it comes to civil. So that's why it's hard to tell. General Mechanical 665 score. You should apply at IITs and get something. You are already what 2 years drop. You are not 1.4 years drop. Tanchandra, you are 2 years drop. Uh, So yeah, don't prepare. Get into something that will be better thing to do. Can you tell options left if not placed after? Okay, 1 plus T is saying what are option after not getting place in MS and PhD? It's same as M.Tech. What you do then, you talk to your supervisor, you ask them, can I stay here for one extra semester, one extra year? I'll continue some research. Or you get out, you start preparing for something else. Again, the whole preparation cycle. This is or you start, approaching your friends, asking for referral in companies. Mostly people do the third thing. They approach people, get placed into private company like that. तो ये चलता रहता है. दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल बट एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट एवरीवन गेट प्लेस्ड. कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है. इन कैंपस नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस तो हो ही जाता है. चलो, आई थिंक दैट शुड बी ओके. यस, 1 plus T. आई थिंक आई सॉल्व. एज अ CH स्टूडेंट ऑपरेशनल रिसर्च एंड डाटा में क्या पढ़ाया जाता है? ओके, ऑपरेशनल रिसर्च एंड डाटा साइंस पढ़ाया जाता है. इट डजेंट मैटर व्हाट स्टूडेंट यू वेयर, वेदर यू आर फ्रॉम व्हाट CHE और मैथमेटिक्स. एनवायरमेंटल स्टडीज, इस बार एनवायरमेंटल के बहुत लोग हैं लग रहा है. अंकित होले, आई थिंक आई हैव कवर्ड योर डाउट्स. 1 plus T, if you are here, I have covered your doubts. MS by research, okay. आह, ये भी हो गया. भाई कितने बार रिपीट करोगे? Okay, now I'll start from bottom. Old IIT CSE at 721 rank. CSE में कंपटीशन बहुत है, थोड़ा मुश्किल ही है. It's all right. Could you please tell how could one get into teaching job in reputed institution? IIT में टीचिंग के लिए PhD लगती है. आजकल PhD भी काफ़ी नहीं है, पोस्ट डॉक लगती है, वो भी फॉरेन से. वो भी मिलेगी कि नहीं पता नहीं. सो देन जो स्टेट लेवल पे पॉलिटेक्निक होती है वहां पर एमटेक थ्रू लोग लग जाते हैं. मेरे 2-3 दोस्त है UPPSC थ्रू, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम होता है उन्होंने क्लियर किया. नाउ दे आर प्रोफेसर, दे आर प्रोफेसर लेक्चरर जो भी है. इज इट डिफिकल्ट टू लीव एमटेक इफ आई गेट जॉब इन बिटवीन? डिफिकल्ट तो नहीं है. यू जस्ट फिल आउट फॉर्म, डू सम, जो भी तुम्हारा ड्यूज है वो क्लियर कर दो, यू आर ऑफ टू गो. नोबडी विल क्वेश्चन यू. बार्क का क्या कट ऑफ रहता है? यूजुअली यू कैन एक्सपेक्ट AIR 200 to 250 इन ऑल द ब्रांचेस. मैकेनिकल थोड़ा हायर में भी 300, बट बाकी का 200-250 के रेंज में ही रहेगा. अनिकेत इज सेइंग आई डोंट नो हाउ टू गिव SOP. मुझे DM करो. आई हैव फ्यू SOPs इन हैंड. I'll शेयर इट विथ यू. इंटरडिसिप्लिनरी में प्लेसमेंट कैसा होता है? आई ऑलरेडी कवर्ड इट. सर PhD का प्लेसमेंट कैसे होता है? कृतिका इज आस्किंग. PhD हैज नो ऑफिशियल प्लेसमेंट. सम कंपनीज कम, they may hire PhD, but understand PhD gets almost same paid as much as M.Tech MS do. So I mean, if you think about it,
money wise, there is hardly money wise placement in the placement. There is hardly any benefit between PhD and MS MTech people. That's why PhD might not be as lucrative as you think. It has lower cutoff. That doesn't mean it's good. Uh, it has some other issues. Chalo. So with that, I'll call it a day. Sir, is it how long is too long career gap for GATE preparation and how to answer by justifying it? Hardly you will not be asked this question unless it's 4 to 5 years. If it's so, just say that you are preparing for something government and then in between you thought that I should be career oriented now. So I thought that I always had a zeal toward mechanical engineering. So I prepared GATE again and I went into IIT. So that should be a good answer. Chalo, so I think most of your doubts are clear now. Uh, I'll take a leave. Bye bye. Thank you for staying awake so long. Thank you very much. कुछ हो you can contact me. Okay, bye bye. Recording stopped.